Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी और आर्थिक खबरों को लेकर, साथ ही शेयर बाजार की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए इन खबरों पर आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवाल। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Prime Minister Narendra Modi addresses G20 Foreign Ministers meeting. Says world looks upon G20 to ease challenges of growth, development, financial stability and food and energy security. Supreme Court forms expert committee to look into Hindenburg report on Adani Group companies. Directs SEBI to probe violation of rules. And domestic share markets witness losses of over 0.5% amid weak global cues. Sensex ends below 59,000 mark, while Nifty settles below 17,350 level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कहा कि दुनिया विकास की चुनौतियों को घटाने, वित्तीय स्थिरता बहाल करने और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए G20 देशों की ओर देख रही है। उच्चतम न्यायालय ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मामले में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। सेबी को नियमों के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट। प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक नीचे लुढ़ के। सेंसेक्स 59,000 से नीचे आकर हुआ बंद। निफ्टी 17,350 के स्तर से फिसला। Well, let's start off with the big story that we are tracking for you this evening. Prime Minister Narendra Modi has said the world looks upon G20 member countries to ease the challenges of growth, development, economic resilience, financial stability, transnational crime, corruption, terrorism, and food and energy security. He said G20 has the capacity to build consensus and deliver concrete results in all these areas. Mr. Modi was addressing the opening segment of G20 Foreign Ministers meeting through a video message today. The formal meeting of the G20 Foreign Ministers under India's presidency was held at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. Speaking at the event, the Prime Minister observed that post-World War, global governance failed in both its mandates of preventing future wars and fostering international cooperation on issues of common interest. He further added that the tragic consequences of this failure are being faced mostly by all the developing countries, and the world is at risk of rescinding on sustainable development after years of progress. The Prime Minister also noted that many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. He said it is the developing countries that are most affected by global warming caused by rich countries. Mr. Modi said that the G20 has a critical role to play in finding the right balance between growth and efficiency on one hand and resilience on the other. Deepshika, quite a lot has been emphasized by the Prime Minister, and rightly so. Especially, all these challenges of growth, development, economic resilience at this point in time, and also, about wars being fought in the world and its impact on the entire world. Let's start off with, the economic angle, economic resilience and financial stability. What do you feel? Thank you, Rangabhashya. Prime Minister has totally sort of laid the ground, laid the agenda for the G20 ministers. And, G20 presidency of India comes at a very crucial juncture. World is facing multifarious challenges.
And if you look at the entire global situation, while India, and IMF, World Bank, everyone has called India a bright spot, but the world is a very different picture altogether. Countries are struggling with very high inflation, growth rates are still slipping. There is forecast that advanced economies may slip into recession. It may be a mild one, but there still be. So there are multifarious challenges, and Prime Minister also, has pointed out a very big economic issue which is confronting the global economy, which is the high debt of a number of poor countries. So we saw at the G20 finance ministers meeting also in Bangalore, there was a lot of discussion on how a solution, on the kind of solution which should be put forth. And there's going to be more discussions around that as to how the restructuring of the debt would happen. So there are multiple challenges that the world is grappling with at the moment, and India, I think, in its presidency would try to offer some kind of solutions to these issues going forward. दीपशिखा जी, प्रधानमंत्री ने जो लगातार कह लें कि एक सतत विकास के लक्ष्य को पाने का आह्वान किया है, उसके साथ ही आपने कहा कि आधार भूमि उन्होंने तैयार कर दी है। भारत उभरता हुआ कह लें कि ठिकाना निवेश की दृष्टि से है, दुनिया भर के लोग विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से क्षेत्र आपको लग रहे हैं, और जो ये G20 देशों की बैठक है उसमें हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं कि एक तो बातें हुई और बातों से परिणाम क्या निकल सकता है इस बैठक का आर्थिक दृष्टि से? देखिए, ये जो G20 देश हैं, ये दुनिया के सबसे जो महत्वपूर्ण इकोनॉमीज हैं उनका एक समूह है। तो ये जो भी निर्णय लेते हैं नीतियों के तहत, और इनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो भी निर्णय लेंगे, उसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इस समय जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बहुत इन्फ्लेशन से जूझ रही हैं, हमने देखा है। और जो वहां के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई हैं। उससे जो चुनौतियां आएंगी, जैसे हमारा देश भी है, हमारे देश के सामने भी इससे डील करने की, इससे जूझने की चुनौती आएगी। तो G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये जो नीतियां हैं इनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कि ताकि बहुत टर्बुलेंस ना हो विश्व में और अर्थव्यवस्था चलती रहे। दूसरा, आपने कहा कि निवेश की जहां तक बात हो रही है, बहुत सारी नीतियां भारत में ली गई हैं। हमने देखा है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम्स आई है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काटा गया है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो निवेश के क्षेत्र हैं और जो नीतियां लाई गई हैं, इनको शोकेस किया जाएगा G20 प्रेसिडेंसी में। और उसके साथ साथ डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भारत ने बहुत आगे भारत निकल गया है, उसको भी लोगों को दिखाया जाएगा, और दूसरे देशों को भी ये जो हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल का, उसको ऑफर किया जाएगा। हम किस तरह से विश्व में सहयोग कर सकते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं। Yeah, and Deepshika, the way the Prime Minister has articulated, and especially when he says that, G20 has the capacity to build consensus and deliver concrete results, doesn't that show the confidence India has, as a country, as an economy, and also as the president of the G20, that, it can bring about, people and countries with varying opinion on a single platform and on the same page? Definitely, and we saw that. In fact, even at the Bali ministerial meeting, we saw that, how India played a huge role in, formulation of the declaration that came out from the Bali Leaders Summit. So definitely during its presidency, India would sort of try to, forge consensus on some of the key issues which are before the G20, including on the debt resolution, which is a huge challenge. So these are some, and again, we are talking about a framework for crypto. I think things are moving forward. They look like moving forward. So these are some of the issues on the table on which India would definitely try to build consensus within the G20.
Yeah, and he also spoke about transnational crimes, including economic offenders and fugitives. Doesn't that call for all these countries to have better cooperation so that these criminals are sent back to their countries and they face justice? Definitely, and we have been trying to pursue some of these cases, as we know, with economic offenders, trying to get them extradited back to India. And a global framework, Prime Minister has sort of put this before the G20 foreign ministers, that, there is a need for having a global framework which would make these processes expeditious. You don't have to go through 2-year, 3-year long process of extradition. If we have a global framework, if we have an agreement, we can do this swiftly and people can be brought to book. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत तथा इटली ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान ये निर्णय हुआ। साझा संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत तथा इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में निवेश के अवसरों के द्वारों को खोल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सूचना प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, संचार और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर बल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत तथा इटली के बीच स्टार्टअप सेतु स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली भारत तथा इटली के संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। यहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, दोनों अपने 75वें कहने के वर्षगांठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम दोनों देशों के बीच क्या आयाम बनते जहां पर कि अच्छे अवसर दोनों पक्षों के लिए निकल सकते हैं? देखिए, भारत में बहुत सारा नीतिगत काम बहुत हुआ है कि किस तरह से हम निवेश को और बढ़ावा दे सकते हैं देश में। बहुत सारे हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। जैसा मैंने पहले भी कहा, PLI स्कीम आई है जिसके तहत बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनमें निवेश को कितना आसान किया जा सकता है विदेशी निवेशकों के लिए। इस तरह के बहुत सारे इंटरवेंशंस किए गए हैं। तो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उसका फायदा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को थोड़ा होने लगा है और पूरे विश्व में अगर देखें तो भारत को एक शाइनिंग स्पॉट कहा जा रहा है। तो इस तरह से भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के बतौर निवेशकों के लिए उसको पेश किया जा रहा है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के तहत इटली के साथ भी जो है हम संबंधों को अब एक स्ट्रेटेजिक रूप देना चाह रहे हैं और उसे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसे समय पे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत चल रही है, तो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड और बिजनेस और इकोनॉमिक संबंध हैं उनको भी अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इटली एक भागीदार है यूरोपीय संघ में, तो उससे भी उसको बढ़ावा मिलेगा, इटली का भी सपोर्ट मिलेगा इस FTA की तरफ। आइए आगे बढ़ें। उच्चतम न्यायालय ने आज अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से सामने आए मुद्दों पर एक विशेष समिति गठित की है। इस समिति में 6 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सप्रे करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये समिति 2 महीने में न्यायालय में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश करेगी। उच्चतम न्यायालय ने बाजार नियामक सेबी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सारी सूचनाएं समिति को दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने सेबी नियमों के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन की भी जांच के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने सेबी से शेयरों की कीमतों में किसी प्रकार के छेड़छाड़ से संबंधित मुद्दों की भी जांच करने को कहा है। आइए चलते हैं अब शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार।
घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों पर सेंसेक्स एक बार फिर 59,000 के नीचे आकर बंद हुआ। निफ्टी भी 17,500 के स्तर से फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 502 अंक यानी 0.84% घटकर 58,909 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 129 अंक यानी 0.74% कम होकर 17,322 दर्ज हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.31% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.22% नीचे आ गया। Well, as Manoj just mentioned, the domestic share markets today closed with losses of more than 0.5%. Index of top 30 companies on the Bombay Stock Exchange, Sensex, ended below the 59,000 mark, while Nifty at the National Stock Exchange settled below the 17,350 level. Both stock indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex declined 502 points or 0.84% to close at 58,909, while the Nifty fell 129 points or 0.74% to close at 17,322. In the broader market, at the BSE, mid-cap and small-cap indices ended with marginal losses. Mid-cap index shed 0.13%, while small-cap dropped by 0.22%. In the Sensex pack, 6 companies posted gains, while rest 24 witnessed losses. Sun Pharma was the top gainer, rising 0.7%, followed by Power Grid adding 0.6%, while HCL Tech ending 0.5% up. On the other hand, Maruti slipped 2.4%, Axis Bank dipped 2.3%, and TCS went down by 1.9%. Mahindra & Mahindra closed 1.7% down. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged losses while 6 logged gains. Realty index gained 2.1%, utilities rose 0.7%, while oil and gas sector added 0.3%. On the other hand, tech sector tumbled 1.3% and IT sector tanked 1.2%. Auto and Bankex both ended 0.9% down. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,936 companies fell while 1,538 companies gained. Shares of 126 companies, however, remained unchanged. Deepshika, to talk about the stock markets, for quite some time, like almost last one and a half months, the markets have seen tumultuous news. But despite that, it was hanging on to that band of 60,000, 61,000. But from there on, it has come down a lot, 58,000 to 59,000 band. Do you think in the short run, in the next, a month or so, this is how it will be, or from here on it will, start its upward journey again? If you see, there is a slight nervousness which is building up, especially because the earlier expectation was that interest rate cycle, the increases in interest rate by US Fed and other central banks may sort of pause, but now it looks like that it is going to continue. And most central banks are even our own RBI has given the same our signals. own RBI, because the inflation signals are not very positive, and central banks, the key objective is to bring down inflation rates. So now the indication are that possibly the rate increase cycle, the hawkish stance is going to continue for a while, and that is making markets very nervous. And today's impact also witnessed that there were outflows, and we're seeing that US Treasury, it rose today. And that actually had some impact on the outflows from our market. Going forward, I think once the market sort of discounts that this development that interest rates are, the cycle is going to continue, the increase cycle is going to continue for a while, and once it is able to figure out how much
possibly there could be some improvement in the sentiment, but as of now there is this nervousness around this, which is sort of showing up. Also, in terms of the data, in terms of the developments which are happening, say tech sector, there are layoffs and all. So that is also sort of showing some amount of, impact on the market. दीपशिखा जी, बाजार में कल हमने तेजी देखी, आज हम गिरावट देख रहे हैं। ऐसे में एक जो कह लें निवेशक हैं, उनके लिए कौन से ऐसे सेक्टर आपको दिख रहे हैं कि वहां पर निवेश करना या वहां पर मुनाफा वसूली कर लेना इस उतार चढ़ाव के खेल में अच्छा रह सकता है? देखिए, निवेशकों के लिए इस समय जो है, अगर एग्जिट का बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन जहां पे उनको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां वो प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं, उन्हें कर लेना चाहिए। और जिन सेक्टर्स में लगता है कि जो सेक्टर्स आगे थोड़ा अच्छा करेंगे, हमने देखा है ऑटो में थोड़ा, अगर आप सेल्स देखें, सेल्स बहुत रोबस्ट है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा केपेक्स का प्रोग्राम है, इस साल का हमने बजट देखा, उसको बहुत बढ़ाया गया है, 10 लाख करोड़ किया गया है। तो इससे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, वो आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे ज्यादा सेफ रहता है कि आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी की तरफ जाएं, और इक्विटीज में चूंकि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। Yeah, you're talking about, exiting, in an appropriate manner. But as far as the Sensex is concerned, we have seen highs of 62,000 plus. From there on, some 4,000 points down. Is this the time for, some bargain hunting and value buying also? It would be a very, for investors who do not have the expertise to daily track the market and to actually see, you may find something interesting, something which may give you, which may offer you good returns going forward, but you need to have that eye. So if you don't have the expertise, I don't think you should risk it. यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि यदि मान लें बाजार में बहुत अधिक उतार चढ़ाव के आसार हैं, या कभी गिरावट, कभी कह लें कि लिवाली भी अच्छी हो रही है, तो ऐसे में एक नियमित आय के लिए क्या बैंकों की जो एफडी है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए उसका निवेश? हमने देखा है कि ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और एफडीज जो हैं वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो निवेशकों के लिए बिल्कुल एक एफडीज जो है वो देख सकते हैं कि उनको एक रेगुलर इनकम की तरफ अगर ध्यान देना है, और अभी रिटर्न चूंकि उस पर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो बिल्कुल एफडीज एक बहुत अच्छा निवेश है। जी, आइए आगे बढ़ें, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और चीन की कंपनियों से पूंजी निकासी का असर आज कई प्रमुख बाजारों पर दिखा है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के मुद्रास्फीति संबंधी ताजा आंकड़ों से भी ये धारणा बनी कि दीर्घ अवधि तक ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती हैं। इन सब कारणों से कुल मिलाकर आज एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में बिकवाली देखने को मिली। अधिकांश एशियाई शेयर बाजार आज घाटे के शिकार हुए। हांगकांग का हेंग सेंग 0.9% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.1% नीचे आकर बंद हुए। हालांकि निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% उछाल के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां गिरावट का सिलसिला दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% नीचे चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.5% की गिरावट थी और जर्मनी का डेक्स 0.6% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। Let's take a look at the American markets as well. In US markets, 2 of the 3 major indices declined yesterday. The Dow Jones Industrial Average was flat, while the S&P 500 declined 0.5%, and the Nasdaq Composite Index lost 0.7%. Deepshika, whether we talk of European markets, Asian markets, or Indian markets, and even the American markets, it seems as if the sentiment is not right, and that confidence is surely not there.
Definitely, because the global cues, there is this nervousness which is building up, and it's building up everywhere, and because the factors are the same. The inflation rate is still sort of not been contained, so obviously central banks will continue to be aggressive in raising rates, and we don't know how long that is going to continue. And then there is this uncertainty about the war in Europe, the Ukraine-Russia conflict, which is continuing. There is still no end, which it's been more than a year now. More than a year now. 24th February was it completed a year. So there is this uncertainty, and of course, we've seen that playing out in other commodity markets also. So this whole nervousness, that pressure is sort of building up. It's seen, and it is seen in all markets across the world. That's right. Let's take a look at the oil scenario as well. Oil prices rose today amid optimism over a revival in Chinese demand, even as concerns linger about inflation in the US and Europe. In intraday trade, Brent crude was trading at around $85 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading at $78.30 per barrel. Deepshika, very brief comment on the oil scenario as well. But thankfully, despite all these uncertainties, oil prices have kind of stabilized in that region of $80 per barrel, isn't it? Yeah, that's fantastic news for us, definitely. Oil prices, in terms of demand, because obviously what the central banks are trying to do is contain demand, and that is showing some impact, and oil prices are showing. So there is no certain spike in the demand. The supply is continuing. Yeah. So it is remaining, it's hovering around, in the range of 80, 85, so on. And which is good news for us, because if it continues in this range for a while. And I'm inclined to talk about our domestic oil prices as well, petrol and diesel prices at the retail level. They haven't, thankfully, they are stable now. They haven't been revised for many, many weeks now. So that in a way gives comfort to the consumers, our domestic Definitely consumers. A huge cushion, and especially at a time when inflation rate has continued to be high. We've seen that because it feeds into a lot of food prices as well in the long run. So definitely a huge relief for the government. As we know, government did cut excise duty on oil products. Although some of the states are yet to cut it further, but I think if it remains in the range, I think consumers would be sort of shielded from price hikes for some time. आइए चलें सर्राफा बाजार। सर्राफा बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 70 रुपए बढ़त के साथ 55,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी मांग कम निकलने से अंतिम समाचार मिलने तक 490 रुपए घटकर 63,490 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर चल रहा था। ये $1,842 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी थोड़ी सी घटकर $20.90 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में दीपशिखा जी समझना चाहेंगे, सोने के लिए आने वाले दिनों में क्या आसार आपको दिख रहे हैं? देखिए, चूंकि ब्याज दरें जो विदेशी सेंट्रल बैंक है, खासतौर पे यूएस फेड चूंकि बढ़ा रहा है और इन्फ्लेशन वहां पर अभी भी काबू में नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि सोना जो है अभी इसी रेंज में रहेगा और हो सकता है थोड़ी बढ़त भी हो, क्योंकि ये एक ही निवेश का एवेन्यू है। जी, बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi addresses G20 Foreign Ministers meeting. Says world looks upon G20 to ease challenges of growth, development, financial stability and food and energy security. Supreme Court forms expert committee to look into Hindenburg report on Adani Group companies. Directs SEBI to probe violation of rules. And domestic share markets witness losses of over 0.5% amid weak global cues.
Sensex ends below 59,000 mark, while Nifty settles below 17,350 level. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.